सर एक बार चेक कीजिए ना, लाइव है ना हम लोग? यस, सो हम लोग लाइव आ चुके हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं कि आज का जो सेशन है ये हमारा बहुत ही स्पेशल सेशन है। हमारे साथ आज जुड़े हैं परमेश्वरा कुमार। इनके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके बाद जो भी आपका सवाल है वो आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं रिगार्डिंग कैसे करना है, क्या करना है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में परमानेंट इनकी जॉब है। सुबह 7 बजे जाते हैं, शाम को 6 बजे घर आते हैं। वेल सेटल्ड जॉब, अच्छी खासी सैलरी, चीफ मैनेजर का पोस्ट है। मतलब अपने को लाइफ में और क्या चाहिए? हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं, इतनी दौड़ भाग कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई करें कि एक अच्छा वेल सेटल्ड जॉब हो जाए, एक अच्छी हैंडसम सैलरी हो हमारी, तो ये सभी कुछ परमेश्वरा के पास ऑलरेडी है। और लेकिन फिर भी ये करंटली क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं पहले कि ये अभी पीएचडी कर रहे हैं। इसके साथ ये आपके मार्च 2023 का जो सेशन हुआ था उसमें कॉमर्स में नेट क्वालिफाइड है। अभी जून जो सेशन हमारा हुआ, जून 2023 का सेशन, इसमें इन्होंने मैनेजमेंट में नेट क्वालिफाई किया। और यहां तक अभी रुके नहीं है, अभी आगे भी है। आगे दिसंबर में जो इनका टारगेट है वो है कॉमर्स में ना जाकर इकोनॉमिक्स में फिर से इनको नेट क्वालिफाई करना है। जैसा कि इन्होंने बताया कि मैम अब इकोनॉमिक्स में करना है, कैसे क्या किया जाए। तो क्यों ऐसा, जिसके पास सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी ये क्यों टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं, क्यों पीएचडी कर रहे हैं, क्यों नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, क्या इसके पीछे रीजन है और कैसे इन्होंने ये सब कुछ किया? सुबह 7 बजे ऑफिस जाना और रात को 6 बजे आना, उसके बाद पढ़ाई पॉसिबल नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी ये रेगुलर 4 घंटा 8 बजे से लेकर 12 बजे तक रेगुलर पढ़ते थे विदाउट एनी मिस, है ना। मुझे याद है कि हर क्लास में ये प्रेजेंट होते थे, कोई रहे चाहे नहीं रहे, थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन परमेश्वर ऑलवेज प्रेजेंट रहते थे। तो आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ऐसा क्यों रहा, कैसे रहा, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, इनके पीछे क्या इनकी रणनीति है। यस परमेश्वरा। Good evening, ma'am. Yes, good evening. I thank Testbook team and especially to you for giving me an opportunity once again, because my last interview you conducted on April 14, 2023. It's not even 112 days. So again, it's I thank you once again for giving me an opportunity. So you asked me why I am pursuing my studies. Yes, you have well settled job, you have handsome salary, then why you are still preparing for UGC NET, doing PhD? Means why you are doing so much extra effort? I am working as a Chief Manager of Finance in HAL. So my office, I'll be committed with the work responsibilities, and the evening, instead of wasting my time, I'll be updating the knowledge. So this is a great opportunity to test myself whether my knowledge is getting updated, especially for a commerce students. Knowledge updation is required. GST, every council meeting they are bringing a lot of amendments. In the last 51st council meeting also they made casino and all taxable at 28%. So like this, because we don't know in UGC NET which aspects they'll be covering. Likewise in taxation, income tax, every year they're bringing amendments. So this is the commerce subject is mainly updation is required. Since management, UGC NET management, almost 60% to 70% topics are similar to commerce. Yes, exactly. Around 6 units are similar. 60 to 70% units are similar. Yes. And for me, I didn't get enough time to study management in detail for this June 23 exam. Hardly 1.5 months is there from the date of applying for the exam. From only the day 1 month prepared. 1.5 months, not even 1.5 months is there. So it's very challenging for me to, and
totally I depended on paper 1. Yes. So because paper 2, except commerce portions, I don't know the management topics. So I've taken the support of paper 1, and with the same confidence, I appeared for the exam. And the day I have written the exam. For management, I have not waited for result. The same day, I started preparing for the exam once again. Only on declaration of the result, I stopped studying management, and Okay, means you are immediately not confident that you will crack the exam. I kept hopes for paper 1. Paper 2, I was little doubtful. Of Okay. course, it is like a win-win situation. I was a little doubtful. How many questions are corrected in your paper? Paper 1, I covered out of 50, 33 questions from paper 1, and paper Okay. 2, out of 100, 50. मैं थोड़ा सा बता दूं कि परमेश्वरा को हिंदी नहीं आती है ना? इनको हिंदी समझ में आती है, हिंदी बोल नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, मेरी जो क्लासेस होती थी वो पूरी हिंदी में होती थी, बट स्टिल वो सारा कुछ समझते थे। और पेपर 1 का जैसे कि आपको पता है कि जो रिजल्ट होते हैं वो आपके कट ऑफ जो होते हैं अपने को परसेंटाइल में होते हैं, नंबर में समझ में नहीं आते हैं, है ना? कॉमर्स में ऐसा होता है हमारे साथ। तो यहाँ पर कट ऑफ जो भी बच्चे सक्सेस हुए हैं, जिनके भी नेट या जेआरएफ क्लियर हुआ है, कितने पर क्लियर हुआ ये हमको जानना बहुत जरूरी है, ताकि हमको एक समझ में आए कि हाँ भाई, जैसे कि परमेश्वरा का पेपर 1 में 33 क्वेश्चन सही हुए और पेपर 2 में 50 क्वेश्चन, यानी कि 83 क्वेश्चन में इनका नेट हो गया है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में इनका कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी है। तो यहाँ पर समझ में आया कि हाँ ठीक है, इतना के आसपास अगर हम लोग टारगेट रखेंगे तो हमारा एग्जाम जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो परमेश्वरा एग्जाम का जो पैटर्न था इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ। तो स्पेसिफिकली क्योंकि आपने जून वाला पेपर अटेम्प्ट भी दिया और आपने मार्च वाला अटेम्प्ट भी दिया, तो पेपर 1 में क्या चेंजेस आपको देखने को मिला और पेपर 1 में बच्चों को कहां पर फोकस करना चाहिए, थोड़ा सा ये बताइए। Paper 1, the first question is on DI. Okay, okay. So when I've seen the paper 1, the first question itself, it was very time taking. So my strategy is I kept the question pending till the last. DI, they asked more of calculation oriented, and I know very well if I attempt this question, I'll be wasting 20 minutes straight away. अच्छा, ओके, डीआई को मींस आपने छोड़ दिया लास्ट के लिए एकदम। I kept it last. ओके, टू सेव योर टाइम। To save my time, because I know very well the paper is lengthy. ओके ओके ओके। And the strategy is they're not asking on teaching aptitude. They are covering mainly on people environment ओके and Indian logic ओके and logical reasoning. They're concentrating more on, and 1 or 2 questions on ICT. ओके That means that they're not giving main core aspects on, they're covering only DI, reasoning aptitude, and the computer, ICT, not computer, communication and research methodology. So they're stressing more only on the research methodology, and the limited portion on the communication skills. मतलब बहुत लिमिटेड आपने पढ़ाई की, लिमिटेड टॉपिक्स को आपने टच किया था while preparing. No, while preparing, I concentrated mainly on research methodology, ICT, Okay. logical reasoning, and DI. Though I prepared for DI, I was not able to attempt the question. Of course, out of 5 questions came from DI, 3 were luckily correct. Because अच्छा, 2 I was. DI is your weak area. No, it was more time taking. अच्छा, time consuming. Okay. Consuming. So I left the DI to the last. And the other questions are all very easy. They're asking mainly on the current higher education, latest aspect of the higher education. So I have referred annual report of the UGC. From that annual report, I got almost 5 questions from the straight away from that annual report itself. So बच्चों के थोड़े से क्वेश्चन आ रहे हैं परमेश्वरा, ठीक है, लाइव क्लास है, लाइव आपका इंटरव्यू है, तो बच्चे काफी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस उनको शेयर करेंगे। तो गुड्डी पूछ रही है कि सर आपने कितने आवर पढ़ाई की थी, तो अपना आवर और स्ट्रैटेजी थोड़ा सा गुड्डी को बता दीजिए। Paper 1,
I used to dedicate 2 hours and paper to 2 hours apart from the regular YouTube YT classes of Priyanka Ma'am at 8 p.m. And Testbook app, I used to go through the Divyani Ma'am pre-recorded videos. अच्छा, आपने एक चीज और बता दो कि टेक्स्ट बुक का आपने पेड कोर्स भी लिया था, है ना? Yes, तो I have टेक्स्ट बुक taken का in the December. Yes, December yes. 22, I have taken on 27th December. इन्होंने And हाँ the एक valid- चीज और बता दूं कि इन्होंने टेक्स्ट बुक का पेड कोर्स लिया है। पेड कोर्स में कॉमर्स के थ्रू इन्होंने एग्जाम क्रैक कर लिया, मैनेजमेंट के थ्रू एग्जाम क्रैक कर लिया। अब इनका नेक्स्ट टारगेट इकोनॉमिक्स है और एक ही साल का इन्होंने कोर्स लिया और इनका टारगेट है कि एक साल के अंदर ऐसा पैसा वसूल करना है टेक्स्ट बुक से कि तीनों एग्जाम क्रैक करना है ना परमेश्वरा? The validity is there till June 24. 24 तक वैलिडिटी है। Because I ये have taken कोर्स आपको कोर्स 1 year plus 6 हेल्प months. कर रहे हैं आपको? कोर्स कैसे हेल्प किया कोर्स ने आपको, टेक्स्ट बुक के कोर्स ने? One advantage with the textbook paid course is that the questions, each question MCQs, if you answer one MCQ, you know 4 different concepts. Exactly. Because it's very elaborate. I used to take minimum 1 hour for attempting only 30 questions. Because after attempting 30 questions, I'll go through each question. Each question takes me 2 minutes to read the concept. So that is very much helpful for cracking the UGC NET exam. And मीन्स कि एमसीक्यू कर आप छोड़ते नहीं थे, एमसीक्यू करने के बाद आप सारे कॉन्सेप्ट को, एक्सप्लेनेशन को पढ़ते थे 2 मिनट तक। yes, though I know the answer, but still I used to cover the other A, B, C, D options so that for revision, it will be, I need not revise the respective topics. If I cover one question, I'm covering 4 topics at the same time. ओके जो मैं एक क्लास लेकर आती थी कि एक क्वेश्चन 4 कॉन्सेप्ट, है ना? उस चीज को पूरा आप लोगों ने प्रैक्टिकली फॉलो किया था। I have followed that, and it's very exhaustive because no one can cover entire textbook previous year questions. Even if you check my textbook app, I have not covered 5% of the total subscription. So I am not able to go through the entire. टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर इतने It's very exhaustive, and it's Yes. the best platform. I think every students, it's better to go through the how to understand the concept from the each MCQ. From test unit 1, paper 1, 2 hours I used to dedicate, and already in my last interview I told that I have taken my help of my professor Dr. Ahmad Basa. yes. So his classes I used to attend. Even how I'm maintaining the textbook application, I'm maintaining the Ahmad AIM Academy coaching center for paper 1. Okay. So still I'm taking his guidance. How you am taking paper 2 from you, I'm taking paper 1 from him. Yes, in textbook app, Preeti Madam, Indian logic, it's very simplified. She has covered many aspects of fool, how to remember. So there are different Indian logic. Usually I refer Preeti Madam. And research methodology, Tulika Ma'am's classes are very helpful. Research methodology. As I'm pursuing my PhD, the research methodology is covering almost 10 questions from the current exam. So it is very much helpful. 6 to 8 questions straight away from research methodology and higher education. What is the role of PYQs in examination hall? PYQ का क्या मेन रोल रहता है? क्या ये हेल्प करती है या नहीं करती है? PYQs help us to manage the time. If you know that each question you should not spend more than 1 minute. By practicing PYQ, I know I should not spend more than 1.5 minute. If I spend more than 1.5 minute, it's a waste of time. It's better to leave the question. So time management and concept building will be known through practicing PYQs. Okay. क्या आपने notes prepare किया था परमेश्वरा? For paper 2, I didn't get time. It's only 30 days time, and almost at that time Divyani Ma'am is not feeling well. She's not keeping well. So only last 1 week before the exam, she has conducted
at a stretch some 7 classes. So in the 1 month, I have attended 7 classes, for marathon classes of each 1 hour each for paper 2. And for paper 1, whatever classes of Preeti ma'am and Tulika ma'am, I maintained the notes. एंड यू नो काफी सारे बच्चे भी क्लास में लाइव है जो आपके साथ ही आपके बैच में थे, जो आपके साथ ही पढ़ाई कर रहे थे और जो काफी अच्छे हैं, जो काफी रेगुलर रहते हैं क्लासेस में, बट फिर भी उनका पेपर नहीं निकल पा रहा है. तो इसके पीछे क्या लग रहा है कि बच्चे 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे रहे हैं, पेपर क्यों नहीं निकल पा रहा? उसके पीछे का रीजन क्या लग रहा है आपको? एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, क्या लगता है आपको? Ma'am, actually, student is having a fear because they have not completed the syllabus. Okay, okay. Even if they have completed 50% of the syllabus, we can crack the exam. So I would There is no need to cover all the 100% syllabus to yeah, crack. it's not at all possible to cover. It's not So compulsory. UGC NET syllabus is very vast. In my last interview, I told commerce is very lengthy and management is less. After writing the exam, all UGC exams are lengthy. It's not possible to cover all aspects. So whatever limited topics which you have covered, we should ensure that you should score whatever we prepared. And before exam, it's better not to learn new concepts. 1 week before, it's better to revise what we already covered the syllabus. What was your revision strategy during your preparation while commerce or management? My revision strategies, I used to attend your YT classes 8 p.m. So I know very well 60% it will be helpful for my paper 2. And the paper 1, I used to refer important topics. I'm not covered all. It's only selective study. For 1 month, it's highly impossible for a student to crack UGC NET. So I don't know why they conducted within 30 days from the application date. Application was last date is 15th May and my exam got over on 16th of June. बच्चे आपके अटेम्प्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं बच्चों को थोड़ा सा बता दूं कि कॉमर्स इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में दिया. आई थिंक अप्रैल में आपने तैयारी शुरू की थी ना, ये फरवरी में ना, फरवरी में शुरू की थी, मार्च में एग्जाम दिया था. तैयारी कब शुरू की थी कॉमर्स वाली आपने? जनवरी मिड. जनवरी I started. यस, जनवरी मिड में तैयारी शुरू की थी कॉमर्स की. फरवरी रुककर मार्च में एग्जाम हुआ. मार्च 2023 में कॉमर्स के फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने यूजीसी नेट कॉमर्स क्रैक किया नेट में. उसके बाद फिर मार्च में एग्जाम हुआ, फिर अप्रैल, फिर मई. अप्रैल तक रिजल्ट आया. उसके बाद मई में फिर उन्होंने तैयारी शुरू की और फिर जून में मैनेजमेंट का एग्जाम दिया. फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो मैनेजमेंट भी क्लियर, और इसके बीच इन्होंने सेट के एग्जाम भी क्लियर किए. तेलंगाना सेट ना परमेश्वरा? यस मैम. कब क्लियर किया वो आपने? In the month of April 23 only मैम. हाँ, 23 में इन्होंने टीएस सेट भी क्वालिफाई किया. और अभी इनके जो आगे लाइन में 2 और सेट ये लेके भी चल रहे हैं. कौन कौन से सेट के क्लियर करने हैं अभी आपको? टारगेट में क्या है आपका? आई एम वेटिंग फॉर द एपी सेट. AP set because recently High Court has given the judgment and the Chief Minister has told that before November 23 AP set exam has to be conducted. So that is the deadline they have given, and I'm waiting for the K set. You already qualified UGC NET, then why you are preparing for set exams? For PhD exam, ma'am, there is weightage given for the UGC NET 5 marks and for state set 3 marks. Okay. So now for applying assistant professor post, though they are telling that PhD is not mandatory, but for assistant professor post, they are asking UGC NET as mandatory and set as also mandatory. Okay. So you are getting 5 to 7 marks because of qualifying UGC NET and set for each subject separately. And the interview weightage is for assistant professor. For PhD, they are giving 30 marks. So indirectly, they are telling that though you are having NET or set, PhD gives more weightage, that is 30 marks. 30 marks, yes. PhD का कोई कंपैरिजन नहीं है, वो अलग ही लेवल पर आपका जो API स्कोर है उसको बहुत हाई लेवल पर लेके चल जाते हैं.
एक बच्ची है प्रीति, वो पूछ रही है कि मुझे दिसंबर में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देना है और मेरा जो बेसिक्स है वो मतलब कि मेरा अभी कुछ क्लियर नहीं है, बेस क्लियर नहीं है, तो कैसे स्टार्ट करें, क्या करें? जस्ट अ Fresher. So the students should attend daily your master class at 10 p.m. so that you will see know how to practice MCQs, and the regular theoretical classes at 8 p.m. in YouTube. So that you will understand the basics. And it's better to have a paid subscription, though paid classes are not conducted regularly, but your YouTube classes are being organized, including Saturdays and Sundays. You are conducting the classes. yes. So only thing is that yes, many of the students they were telling that why paid classes are being conducted, that your team should address it. But by paying subscription only, I got more motivated. And every क्या student I told that आपको ऐसा लगता है कि टेक्स्ट बुक का आपके सक्सेस में कितना परसेंट योगदान रहा, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का? so your YT classes I'll give 70% and textbook 30%. Okay. Because I am building I am concept also part of textbook. I am also part of textbook. but I have not attended not even 5 classes of your paid classes. So because I am not, the timings are not convenient for me. Yes. So even management classes also, I have not attended any of the textbook classes, but all concepts I learned from textbook application itself, because each concept, whatever questions were asked in the UGC NET, already they are in the textbook application. So if at all any students want as a fresher, and they should not waste their time, most of them are chatting in WhatsApp and different Facebook apps. So ये प्रीति पूछ रही है कि नोट प्रिपेयरिंग नोट इज नेसेसरी और नॉट, बिकॉज आई एम अ मदर एंड हाउसवाइफ, तो नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए कि नहीं? मतलब important topics, it's better to maintain a note so that in the last moment revision it will be helpful. ओके. और गुड्डी पूछ रही है कि सर आप किस स्पीड से पढ़ते हो कि इतने जल्दी कॉमर्स भी क्रैक कर लिया, मैनेजमेंट भी क्रैक कर लिया? So as a student, I have attended all the seminars and conferences, so whereby I know what is happening in and around the business environment. Once you are strong at concepts, whether it is NET or SET or any other professional courses, if your concepts are strong, I don't think multiple attempts are required to crack the exam. Yes, So very UGC NET, Commerce, Management and Economics, almost 40 to 60% topics are similar. They're almost similar. Only thing is that, madam, you only had told me to write economics, and you helped me in joining the course also. And you told me that within 2 years of qualifying NET, if you are able to submit the master mark exactly. list, it is enough that you are satisfying the criteria. Yes, exactly. So, on the same day, I enrolled the course, and I am almost now 4 months are over. That means first semester I have to appear in October. So I think the classes will be helpful, and even economic classes now, textbook Simran Ma'am is conducting on a daily basis. Yes. For Rajasthan set and TG set also she is conducting daily 7:30. She is conducting 7 p.m. I am attending Preeti Ma'am's classes of paper 1, and 7:30 I am attending Simran Ma'am's classes. Again at 8 o'clock she is conducting on a textbook app, and 9 p.m. again she is conducting in textbook, and 10 o'clock in YT classes. So daily she is covering approximately 1.5 to 2 hours classes of economics, and you have one class of
8 to 9 p.m. मींस पूरा शेड्यूल पैक है आपका। Yeah. पेपर Now 1, I'm पेपर 2, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स सारे क्लासेस आप कर रहे हैं, कहीं से भी मतलब कोई भी टाइम 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं हो रहा है। yes, but only thing is that while doing this course, we should not bother about what is happening in and around. Most of the students are having other commitments. If you are sparing this 2-3 months for the UGC NET, now even the pay scales have increased up to 42,000 you can get if you're getting a JRF. यस, जेआरएफ क्वालिफाई करने पे 40,000 आराम से आपको 42,000. यस And which other private sector are not able to pay for a freshers like MCOM or for PG students. हाँ, बहुत अच्छी बात एक कही परमेश्वरा ने कि अगर आप सिर्फ एमकॉम करके जॉब करने जा रहे हैं तो किसी जॉब में आपको स्टार्टिंग में 40,000 नहीं मिलेगा विदाउट एन एक्सपीरियंस, लेकिन अगर एमकॉम करके मास्टर्स करके अगर जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपका रिसर्च भी हो रहा है, पीएचडी भी हो रहा है और साथ में आपको 40,000 पर मंथ भी मिल रहे हैं और पीएचडी कंप्लीट होने के बाद जॉब भी आपका रखा हुआ है। बेसिकली उसी कॉलेज में कभी कभी आपको जॉब मिल जाता है इजीली अगर वहां पर वैकेंसी खाली हो तो काफी अच्छा ये अपॉर्चुनिटी है। हाँ, टेक्स्ट बुक देखिए, अगर बोल रहे हैं कि क्या पूरी तरह से टेक्स्ट बुक पे डिपेंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। टेक्स्ट बुक के पेड कोर्स में इतना कंटेंट है, मैं आपको बता रही हूँ, इतना कंटेंट है कि अगर उसको आप पूरी तरह से कवर कर लेंगे तो वो आपके लिए मोर देन एनफ है। मींस अगर 1 साल भी अगर आप रेगुलर पढ़ेंगे तो उस पूरे कंटेंट को कवर नहीं कर पाएंगे। पेपर 1 के आपके जो है आपके पास 6 फैकल्टीज हैं, 4 का रिकॉर्डेड क्लासेस है, प्रीति मैम, तुलिका मैम का लाइव क्लासेस चलता है। पेपर 2 में आपके पास जो है वो आपको 4 टीचर्स के रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे। 2015 से लेकर 2023 तक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन पेपर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, नोट्स आपको मिल जाएंगे इंक्लूडिंग पेपर 1, पेपर 2। तो कंटेंट इतना है कि अगर उसको ढंग से कर लेंगे तो इट इज मोर देन एनफ। यस परमेश्वरा? Yes, ma'am. I'm right. Yeah. No one can cover. Even no one can cover, exactly. So if at all somebody is taking 3 months subscription, it is not at all enough. Not sufficient. Minimum 6 months to 1 year it has to be taken. How? Yes, exactly. So anyhow, 1 year if I am taking, they are giving another 6 months as a benefit. Yes. So I have taken for 1 year. So they given up to June 24 from December. So 1.5 year I got that. Still I have not covered 5% of the textbook application. Maybe I would have attempted some 500 MCQs, but still it's not enough. 500 MCQ you done? MCQs. Commerce some 200, economics some 100, and management. So in that way, so almost 500 I covered. But I'm learning a lot from while we are answering the MCQs and PYQs. Yes, so which is very much required. Beneficial, yes. So and the minimum 4 to 5 months is required for cracking the exam. Of course, for me it is 1 month. It is very tough, and I have no confidence. But somehow, crack paper 1 I am able to, and with your blessings, I am able to qualify. And I request the same support for my future also. For my PhD. Sure. Thank you so much, परमेश्वरा। और आई होप कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट में दिसंबर वाले सेशन में मैं फिर से आपका इंटरव्यू लूंगी। मैं ये श्योर हूँ, ठीक है, कि अगेन यू क्रैक्ड इकोनॉमिक्स एंड अगेन वी विल टेकिंग योर इंटरव्यू फॉर श्योर, एंड माय ऑल ब्लेसेस विथ यू। और यहाँ पर हम लोग अपना आज का सेशन को कंप्लीट करते हैं, होप सो। कुछ एक बोल रहे हैं कि बच्चे कुछ मांग रहे हैं कि कुछ लास्ट में कुछ उनको टिप्स बता दीजिए, कुछ जो उनको फॉलो करनी चाहिए हर एक बच्चे को कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट जो दिसंबर वाला सेशन है उसमें वो रिजल्ट क्रैक कर पाए। लास्ट में कुछ लाइन एकदम टू द पॉइंट बता दीजिए जिनको फॉलो करके बच्चे अपने गोल को अचीव कर लें। यस परमेश्वरा। You should have confidence. Believe yourself. If you are not believing yourself, then first of all, if concepts are there, automatically you will get confidence. And you should not waste your time. Prepare. यस, मतलब बहुत ज्यादा टाइम आपको मतलब 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, ऐसे नहीं करना है। टू द पॉइंट, 6 महीना सब कुछ छोड़कर पूरा फोकस करना है। यस, and we should learn as if you are not covered before. If at all I am attending a classes of yours, though I would have covered in my BCom, MCom, CA, CWA, CS,
still I respect your knowledge. So that is required as a student to learn and to believe one faculty. Yes, किसी एक को पकड़ के चलना पड़ेगा. yes, in YouTube there are multiple platforms are there. I also sometimes whenever madam is not available or I used to refer other faculty, but it's a repetition. It's a repetition. So it is I feel that we should believe one platform till the end so that we know each other. And also time management is required. Practice MCQs. Syllabus don't learn at the last moment. It's better to complete 1 week before at least. And practice 1 week dedicatedly 10 hours per day. As some employed are there, for them it is 5 hours is required minimum. Daily 5 hours for an employed. 5 hours is minimum you have to give. For employed. And those are students, they can dedicate 8 to 10 hours. And whenever they are preparing, don't leave paper 1. Paper 1 is a scoring. Easy. I am an example with 40% syllabus coverage of management and 60% of commerce I am able to crack because of paper 1. So paper 1 concepts are very much thoroughly revised. Practice all DI and research methodology questions so that you should get minimum 30 to 40 marks, 40 questions from paper 1, and you can depend other 70 to 80 questions for paper 2, so that minimum 200 should be the target to crack NET and 240 for JRF. Okay. Thank you so much, Ramesh. With that benchmark only you should prepare. If you are thinking that 180, 160, it is only because since the UGC has conducted in 1 month time, this time the cutoffs are little lower. Yes. And UGC is strengthening since they are giving a higher stipend and all more avenues considering UGC NET and set as mandatory. Day by day, the exams are becoming tougher and lengthier, and you should be aware of the latest concepts, updates to be known, because whatever questions, updates are happening 6 months before they are asking in the exam. So you should have a current knowledge also in the respective discipline. With this, I thank Testbook and mainly to Priyanka Ma'am. Thank you so much. Thank you so much. All the very best for your future. We will meet again very soon. And I want hat trick from you. बिल्कुल हैट ट्रिक करेंगे इस बार हम लोग दिसंबर में. ओके, चलिएगा. बाय. थैंक यू. और जाते जाते मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि टेस्टबुक के प्लेटफॉर्म पर मित्रों सेल चल रहा है, जहां पर 5 से 6 अगस्त ये सेल हमारा चल रहा है. यहाँ पर कंप्लीट 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. टेस्टबुक के प्लेटफॉर्म पर कितने कंटेंट है, कैसे उसका यूज करना है, आपने देखा परमेश्वरा के साथ भी, और मेरा जो लास्ट इंटरव्यू हुआ था आशिका के साथ में, वहां भी आपने कोर्स का वैल्यू देखा. और हाँ, बिल्कुल आप टेक्स्टबुक के प्लेटफॉर्म पे रिलाई कर सकते हैं फॉर कंप्लीट प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है. और यहाँ पर ओनली 7,795 में आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा. साथ में पास प्रो भी मिल जाएगा, मींस जहां पर प्रीवियस ईयर पेपर के ऑल क्वेश्चंस को आप टेस्ट में अटेम्प्ट कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं. माय कोड इज PSINGH. ये कोड को डाल के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिल्कुल भी लेट मत कीजिए. 6 मंथ का ये सब्सक्रिप्शन है. ओके, और सेल का आज लास्ट डेट है, क्योंकि आज है 6th of August. ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय.